तो बाजारों में एक जोरदार उछाल है और निफ्टी 17,600 के पार पहुंच चुका है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचत कर लेते हैं पहले मार्केट्स को लेकर, फिर आज के जानकार से भी हम बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भी। गाबा सर, पहले तो मार्केट्स में सुबह 17,400, फिर 17,500 और अब 17,600, 17,650 के इर्द गिर्द इंडेक्स पहुंच चुका है। इतनी बड़ी तेजी में अब लॉन्ग क्या ही बनेगा, लेकिन क्या यहाँ पे शॉर्ट या यहाँ पर अब क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है वो? पोजीशन है तो ले जाइए। मुझे लगता है इतना बड़ा अपमूव मिला है और ये कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग अपमूव है। इसका मतलब ये है कि अपमूव और भी बाकी है नेक्स्ट वीक। कल तो छुट्टी है, उसके पहले इतने शॉर्ट कवरिंग है तो मेरे ख्याल से अपमूव है बाकी। तो यस, घर ले जाइए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पर नथिंग टू वरी, बट यस, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए स्ट्रेटजी। अच्छा, और निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें? यहाँ पर भी करीब करीब 2.5% का मूव है, आउट परफॉर्मेंस है, क्या करें अभी? एग्जैक्टली वही हाल है बैंक निफ्टी पे भी। यहाँ पर एंट्री का मौका ही नहीं मिला। जब से बाय मिला है, गैप अप खोला, फिर शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, एंट्री का मौका नहीं दिया। ये शॉर्ट स्क्वीज का पूरा पैटर्न टिपिकल क्लासिकल शॉर्ट कवरिंग का पैटर्न है। अच्छा गाबा सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर नजर रखनी होगी? इंडिविजुअल स्टॉक्स, यस, एसआरएफ में एक मेरे ख्याल से एक तेजी थी। मैं हेवल्स की बात करूंगा। हेवल्स अच्छा लग रहा है मुझे, अब ट्रेड कर रहा है 1380 के आसपास। 1400 जाना चाहिए मेरे ख्याल से। स्टॉप लगाई 1370 का हेवल्स इंडिया। अच्छा, तो 1370 का एक स्टॉप लॉस हेवल्स इंडिया के ऊपर आप नजर रखेंगे। यहाँ पर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ सकती है। गाबा सर से हम आगे ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विद्याशंकर कृष्णन सर मौजूद हैं, वीसी एंड एमडी एमएम फोर्जिंग्स के। कृष्णन सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक चैलेंजिंग सिनेरियो में कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स दिए थे और एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस कंपनी के नंबर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े थे। तो वो जो सिचुएशन सिनेरियो में आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है, पहले तो क्या की हाइलाइट्स रहे उसके, और दूसरा एज वी स्पीक अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? 330 crores sales in the first quarter and significant tonnage increase also. About 18,000 tons was achieved in Q1 of this year as against 62,000 tons for the overall year of FY22. Registering significant growth of more than 25%. We expect this trend to reasonably continue in the quarters ahead and get to about 80,000 tons or thereabouts in this fiscal, and on our way to reach 100,000 tons in the next 12-18 months or so, 18 to 24 months. Ji. The domestic market looks pretty strong. The export market looks a little bit dull considering the war in Europe. This, however, we see that the effects of the war will probably peter out by end of this year, and that again should perk up. So overall, company looks to be pretty strong and achieve around 1,300 to 1,500 crores of turnover in this year. And next year target somewhere around 1,800 to 2,000. जी, अच्छा कृष्णन सर, फर्दर मैं इसको और सेग्रीगेट करूंगा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को लेके। आपने बात सही कही कि हाँ, डोमेस्टिक बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है और परफॉर्मेंस यहाँ पर आई है। एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा नम था। तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो अभी का सिनेरियो है, स्पेशली यूरोपियन क्राइसिस, खास तौर से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, इनपुट कॉस्ट का हायर साइड है, प्लस यूएस मार्केट में भी रिसेशनरी बातचीत उठने लग गई है। तो क्या डिमांड का इम्पैक्ट है, क्या सिचुएशन है वहां पर? Export right now in our mix for the first time, domestic sales has exceeded exports, first time ever. So that probably will be a trend for the next few quarters, as we have been saying this for quite some time, that the new products that we have developed for the domestic market far have exceeded the developments that have taken place in the export market. Europe appears to be, kind of sluggish, getting into a crisis mode on energy. This also augurs well for companies like us, because energy is simply may not be available in Europe in over the next couple of months and beyond. Between October and February, energy will be a significant premium. We already hear that in cities like Berlin, they've switched off lights in the night. Decorative lights that consume a lot of energy have been switched off as initiatives by the cities and governments to conserve
energy. So energy is going to play a significant role. That also means opportunities for exporters into Europe, and also on the countering side will be a slightly reduced demand. So we have to see how all this shapes up. But overall, I would say positive. सर फर्दर सेग्रीगेट करूंगा मैं इसको. अगर आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेवेन्यूज को स्प्लिट करेंगे तो अभी रेशियोज क्या बन रहे हैं, और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन एक्सपोर्ट मिक्स वो कैसा है परसेंटेज में? Overall export revenue stands at around 52% for this. Domestic stands at 52% for this quarter, and exports at about 48%. Now, within overall sales, US stands at about 20%, and Europe at about 22%, and the balance is other countries. Sir, input cost last quarter mein was on a higher side. So what is the present scenario? Is there any cool off in the input prices, or still it on a higher side? One good thing is that since April, there is recently OEs in India have concluded an increase for steel prices, and the good thing is that from 1st July onwards, that increase is dropping. And we expect the drop to continue in the next in Q3 of this year as well. So overall, steel prices appear to be reasonably headed for a cool period. There is a spike in April, no doubt, because a response to the war. In March, April, and May, input prices for steel industries just ran amok, and it was in a panic mode. That has since cooled off and declined. So augurs well for the entire global economy. Recession triggered by inflation is the worry of every economist and central banker these days. So as those worries recede, economies and companies will bounce back. अच्छा कृष्णन सर, ये आपका जो गाइडेंस था, प्रोडक्शन गाइडेंस FY23 के लिए, वो लास्ट क्वार्टर में आपने मेंशन किया था अराउंड 80,000 टन्स टू 85,000 टन्स फॉर FY23. तो आप इसको रिवाइज कर रहे हो पोस्ट दिस सिनेरियो, या अभी भी इंटैक्ट रहेगा वही? It is largely intact, on the course to being intact. Probably we'll end up at the lower end, close to 80,000 this way, that way, or 80,000, rather than on the higher side. Okay. अच्छा, ये 6,300 टन्स प्रेस फैसिलिटीज ये लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट हुई है, और इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट या कोई और फर्दर रेवेन्यूज में, वॉल्यूम्स में कुछ ग्रोथ इस नंबर के बाद, इसके स्टार्ट होने के बाद? Our capacities stood at about 1 lakh tons. Okay. And that is with the 6,300 ton press, it goes up to about 1,20,000 tons. And we're also in the same to add another 10,000 tons of forging capacity. So at the end of this year, we are probably looking at about 130,000 tons, on which we should achieve about 80,000 plus in this fiscal. And next year, we should be challenging the 6-figure mark, or well, it depends upon the economy, this way, that way. Okay. So, sir, what is your present capacity utilization, and what is the capex? What part of capex can we expect in Q2? A quick thing of capacity utilization will be 80,000 by 120 would be about 66%. Okay. And as we go into next year, we would expect this to be 100,000 on 130. So that will be close to about 75%. Okay. अच्छा सर, लास्ट क्वार्टर में ये एक्सपोर्ट फ्रेट जो प्राइसेस थे, यानी कि जो फ्रेट रेट्स थे, दे वर ऑन अ हायर साइड. अभी भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस पे, या कुछ मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहेगा क्या उसका गोइंग फॉरवर्ड? Inescapable, Sumit. Last quarter, export freight rates were on a high. But however, now we see a lot of reports that that freight rates are cooling, containers are available globally, and all the hype that was there last 15 months, that has really come down. So we should see export freight rates also cooling off considerably. Krishnan sir, overall, I would say inflationary impact on a global level is coming down. Okay. कृष्णन सर, ये एक चीज और मैं कहीं पढ़ रहा था कि कंपनी का जो यूएस का सिचुएशन है, उसमें एक अच्छे ऑर्डर बैकलॉग आप लोगों के पास ऑलरेडी है.
तो ये सिचुएशन समझाएं कि प्रेशर जरूर है, बट आप लोगों के पास एक अच्छा ऑर्डर बैकलॉग भी है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कब तक ये एग्जीक्यूशन होगा, कैसे रहेगा ये? The US truck market is in kind of like moribund. Their sales numbers are decent, but so are their inventories, which they have been piling on from producers from tier ones and tier twos like us, or tier twos like us. So inventories of inputs are rather high at the OE level in the US. So over the next 2-3 months, this is expected to get consumed or evened out, and 2024-23 will be a strong year of purchase from them. ओके, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन ठीक है, नए ऑर्डर का जो पेस है वो स्लो है, ये मानूं? Yes, new orders and demand has slightly slowed off from the US. ओके ओके, अच्छा सर, एक चीज और, ऑयल एंड गैस लास्ट क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल के प्राइसेस हमने देखे थे, और इंडियन मार्केट में इंडिजिनस डिफेंस कंपनीज को भी एक अच्छी ग्रोथ के लिए इनवाइट किया जा रहा है। आप दोनों बिजनेस में उतर सकते हैं, ऑयल एंड गैस में भी और यहां पर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सो आप इसको कैसे देख रहे हैं, बोथ द मार्केट्स? Both are, I would say, very strong markets to be in the next few years. Particularly the Indian defense market. This government has done a fabulous job in opening up the defense sector, and every day we are seeing really good news about what's happening on the defense sector. And Forgings, so far, I will admit, has been busy with the automotive market and has not taken any advantage of the defense move. But overall, it augurs well for the Indian economy, and therefore, what is good for the goose is good for the gander. So, if it's good for the economy, it's good for us. So, are you going to bid in for that? We'll have to wait and see. No, nothing yet right now. Okay. We have our hands full, more than our hands full in channelizing our growth from 750 crores last year to 1130 this year to 1200, 1300, and then to 1800. So our team has their hands full. So right now not, but over a period of time certainly yes. Okay, अच्छा कृष्णन सर, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18%, 19% ऑड के आसपास से देखने को मिला था। सो ईयर एंड तक आते आते व्हाट वुड बी द कंफर्टेबल नंबर? इज इट 18%, 19% वेयर वी विल क्लोज दिस फाइनेंशियल ईयर विद दिस मार्जिन? Tough call on that, Sumit. But I would broadly say that we should end up broadly around those levels, because there's a trend in terms of energy costs have gone up, people costs are going up, but overall volumes are also picking up. So by I would say by and large Forgings should be on an even keel as far as margins are concerned. Okay, sir, last question रहेगा कृष्णन सर, एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी आपका फोकस किस पे ज्यादा रहेगा, कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे या पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे? किस में आप अच्छी डिमांड देख रहे हैं? See, basically what we do is we focus on the customer. Some quarters passenger car customers come to us with greater demand. Some quarters CV customers come to us with greater demand. So we don't have a hard and fast rule on this customer this time. But broadly speaking, seeing the demand that we have seen over the last few quarters, the actions taken by us, I would say that the CV space is where we will be growing considerably in the next few quarters. Not to say that the passenger car market is not going to grow. We have seen a lot of lot of traction over there on both domestic as well as export side. So passenger car will also be growing, but I would say CV space will grow faster for Forgings. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो डिफेंस स्पेस है उसके लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप इनकैश करें गोइंग फॉरवर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार MM4 जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ टन। Forgings का स्टॉक करीब 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 927 928 के जोन्स में कामकाज करते हुए, और एक बढ़िया नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में पोस्ट किए थे, टफ चैलेंजिंग सिनेरियो के बीच में भी, और एक स्टॉक भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे भी कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन बाजार की रफ्तार जोरदार बनी हुई है। निफ्टी अभी भी डे हाई पर कामकाज कर रहा है और इनफैक्ट
2.5% से ज्यादा की तेजी अब निफ्टी बैंक में आ चुकी है। 1000 अंकों के करीब का उछाल। 20 मई 2022 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आज आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत करते हैं। देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनियों मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। 2% की तेजी के साथ इंडेक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 17,664 665 का स्तर यहां देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक करीब 2.5% ऊपर है। 1000 अंकों की तेजी ऑलमोस्ट अब निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 998 टू बी वेरी प्रिसाइज यहां पे नंबर है। 39277 इस आंकड़े के साथ इनफैक्ट 1000 अंकों की तेजी बातचीत में ही अब निफ्टी बैंक के अंदर बन चुकी है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप 0.2% ऊपर कामकाज कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, और करीब 1.25% ऊपर अब स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया रफ्तार मार्केट्स में ब्रॉडर बेस बनी हुई है। एक बार आईटी इंडेक्स और लेके आई क्योंकि आईटी आज की ड्राइवर है। जितनी बिकवाली वहां पर थी हाल फिलहाल में पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आ चुकी है। 2.5% ऊपर इंडेक्स भी कामकाज कर रहा है। 38,350 का स्तर यहां देखने को मिल रहा है। तो अब नो योर कंपनी को तो ये समेटेंगे, लेकिन अब कमाई का अड्डा लेके हमारे साथ वीरेंद्र दिल्ली से मौजूद भी हैं। तो वीरू, ये अनुमान लगाया था क्या कि इस तरह की मासिव शॉर्ट कवरिंग आज आती हुई दिखाई पड़ेगी सेकंड हाफ में? देखिए सुमित, फ्यूचर एक्सप्रेस में करीब 17,523 का स्तर था निफ्टी का, और निफ्टी बैंक का डेटा, उस वक्त का डेटा सुमित ये कह रहा था कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, कॉल राइटर्स के पास नहीं था। और 523 के ऊपर की सुमित जो शॉर्ट कवरिंग है ना, उसका कोई पैमाना नहीं था। अब अगर स्क्रीन पे कोई नंबर महत्वपूर्ण इंडिसेस के लिए है तो बस वो यहाँ से 12 पॉइंट दूर सुमित 17,680 710, जो कि सबसे बड़े कॉल राइटर का जोन है, जो कि गुरुवार के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का है। तो शायद एक तेजी का बहुत बड़ा हिस्सा हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए सुमित, जैसे कि आप कह रहे थे ना, आई मीन आईटी इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग आपको कहां ले जा सकती है ये तय करना मुश्किल होता है। सुमित, 17,680 700 ये वो जोन है जिसको अब आप ध्यान में रखेंगे। और आईटी बात सही कही वीरू ने कि जब ये शॉर्ट कवरिंग कहां तक लेके जाएगी कुछ नहीं पता। रुपया दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है, और जो बाजार की तेजी दिला रहा है वो पूरा आईटी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कामकाज कर रहा है। आईटी, एनबीएफसी, बैंक्स, 3 मेगा ड्राइवर और साथ साथ हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये चारों मिलकर बाजार को खींचने में लगे हुए हैं। अब कहां तक लेके जाता है कमाई का अड्डा में छोटे से ब्रेक के उस पार आप जरूर देखिएगा। नमस्कार।